हेलो व्यूअर्स, तो आज मेरे पास है Asus TUF गेमिंग लैपटॉप। आज मैं इस लैपटॉप का रिव्यू दूंगा। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस लैपटॉप। सबसे पहले इसको ऊपर से देख लेते हैं, हाउ डज इट लुक्स। बीच में Asus का लोगो है। ये रहा लैपटॉप। यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, कोर i7 8th जनरेशन विथ NVIDIA GTX 1050 Ti। आज मैं इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप का पूरा व्यू दूंगा, इस लैपटॉप के बारे में। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले साइड में देख लेते हैं क्या क्या पोर्ट्स है। सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट, फिर इथरनेट कॉर्ड, फिर HDMI पोर्ट, 2.0 पोर्ट एंड 3.0 पोर्ट, और यहाँ पे एक ईयरफोन पोर्ट। और अगर आप देख सकते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पे स्पीकर का है। ये दोनों साइड है, मैं दूसरी साइड दिखा देता हूँ। ये रहा दूसरा साइड लैपटॉप का, राइट साइड। यहाँ पे कोई पोर्ट्स नहीं है, सिर्फ एक टंगस्टन लॉक है और कोई पोर्ट नहीं। यहाँ पे नीचे भी एक स्पीकर है, दोनों साइड स्पीकर है। और ये रहा कुछ इसके आप एजेस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और ऊपर में यहाँ पे कुछ LED इंडिकेटर्स हैं। इस लैपटॉप का वेट भी ज़्यादा नहीं है, 2.3 kg अप्रॉक्स। लेट्स स्टार्ट दिस PC and we'll check the boot time of this laptop. It's quite fast. It has a backlit of red color, और इसके साइड में जैसे आप देख सकते हैं सारे डिजाइन्स बहुत ही awesome। And this is how Asus looks from its back, and you can see there is a air outlet. Let me give you some specifications of this laptop। और ये रहा लैपटॉप। साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। कोर i7 8th जनरेशन, NVIDIA GTX 1050 Ti, एंटी डस्ट कूलिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं Windows 10, RAM 8GB। और इस लैपटॉप का स्क्रीन साइज 15.6 इंच फुल HD LED बैकलाइट। Let me give you some specs of this laptop. In this we have a graphics card of 1050 Ti with GDDR5 with 4GB graphics card, and it has a display of 15.6 inch, and it has a webcam over here, and it has a screen resolution of 1920 into 1080, and it has a processor of i7 8th generation with SSD 128GB, RAM 8GB, RAM type DDR4 with HDD 1TB, and it also has a clock speed of 2.2 GHz with turbo boost up to 4.1 GHz, and
In this laptop we also have a hyper cooling technology for enhanced lifespan, and it has an anti-dust cooling for experience of gaming.